Hello everyone, welcome back to our YouTube channel Wisdom Tutorials. Those who are new to the channel, please like, share and subscribe. Students, today is the first video of mathematics. So we decided कि कोई एक important सा chapter start करते हैं. So we are starting with linear equations in two variables. Now students, to understand linear equations, पहले let us understand what an equation exactly is. तो equation को simple words में if we see, it is any mathematical statement which has two things. First, you want at least one variable. At least one variable मतलब कम से कम एक variable तो होना ही चाहिए. अगर ज्यादा है तो कोई प्रॉब्लम नहीं है, बट एक वेरिएबल होना ही चाहिए. एंड द सेकेंड थिंग दैट यू वांट इज एन इक्वल टू का साइन. मतलब अगर ये दोनों चीजें दिख गई तो वी कैन सेफली से कि इट इज एन इक्वेशन. चलो लेट अस अंडरस्टैंड दिस विद द हेल्प ऑफ एन एग्जांपल. एक बेसिक सा एग्जांपल, x plus 2. नाउ लेट अस चेक इफ दिस इज एन इक्वेशन. x मतलब वेरिएबल आ गया, बट वहां पे एक इक्वल टू का साइन मिसिंग है. देयर इज नो इक्वल टू का साइन, मतलब दिस वन ओवर हियर इज नॉट एन इक्वेशन. नाउ लेट अस मेक सम चेंजेस टू दिस. Suppose it is x plus 2 is equals to 5. अब चेक करते हैं if this is an equation. वेरिएबल तो था, इक्वल टू का साइन हमने इंट्रोड्यूस कर दिया, मतलब दोनों कंडीशंस सेटिस्फाइड, तो दिस इज एन इक्वेशन. वेरी गुड. लेट अस सी वन मोर एग्जांपल. एक और एग्जांपल देखते हैं. 2a minus 3 is equals to 8. अगेन 2a मतलब वेरिएबल आ गया, इक्वल टू का साइन भी है, मतलब this one over here is also an equation. Now students, there are many types of equation. तो उसमें से कुछ types इस slide में we are going to observe. Let us see two more examples. X square minus 4x plus 7 equals to 0 and y square minus 7y plus 4 equals to 9. अब ये दोनों ही statements में variables है. कितनी बार यूज किया वो नहीं देख रहे, बट वेरिएबल है एंड इक्वल टू का साइन भी है, मतलब बोथ ऑफ देम आर इक्वेशंस. लेट अस सी सम मोर टाइप. कुछ और एग्जांपल्स देखते हैं. वी हैव x plus y equals to 8 and y minus 3x is equals to 9. Again there are variables, there are two variables and there's also an equal to का sign, मतलब again these two are also equations. Now students, अगर ठीक से ऑब्जर्व किया रहेगा तो स्क्रीन पे देयर आर थ्री टाइप्स ऑफ इक्वेशंस. देयर आर थ्री टाइप्स ऑफ इक्वेशंस. फर्स्ट टाइप पे फोकस करते हैं. x plus 2 equals to 5 and 2a minus 3 equals to 8. Can you tell me what is the degree of these equations? Now degree का basic definition, highest power of the variable in that statement. Highest power. तो यहां पे वेरिएबल का हाईएस्ट पावर चेक करेंगे. तो वेरिएबल है x, पावर है 1. वेरिएबल है a, पावर अगेन इज 1, मतलब द हाईएस्ट पावर ओवर हियर इज 1, तो द डिग्री इज 1. एंड एनी इक्वेशन व्हिच हैज डिग्री 1 इज कॉल्ड अ लीनियर इक्वेशन. रिमेंबर द स्टूडेंट्स, डिग्री 1 मतलब लीनियर इक्वेशंस. अब if you observe there is only one variable in both the equations. इसीलिए ऐसे टाइप के equations को we call linear equations in one variable. Let us focus on the second type now. Second type पे देखते हैं. Can you tell me what is the degree of both these equations? दोनों का डिग्री क्या होगा? यहाँ पे if you check, the highest power is 2. The highest power is 2. मतलब the degree is 2, and whenever any equation has degree 2, such equations are called quadratic equations. Quadratic equations. Again एक ही वेरिएबल को यूज किया गया दोनों इक्वेशंस में, इसीलिए such equations are quadratic equations in one variable. I hope you're getting the point. Now last type पे फोकस करते हैं. Last type, x plus y equals to 8 and y minus 3x is equals to 9. Now students, यहाँ पे what is the degree? The degree is 1. दोनों equations में दो वेरिएबल्स है, दोनों का पावर सेम है and it is 1,
मतलब द डिग्री इज 1, डिग्री 1 है तो लीनियर इक्वेशंस हो गए। वेरिएबल्स कितने हैं? देयर आर 2 वेरिएबल्स इन बोथ द इक्वेशंस, तो ऐसे टाइप के इक्वेशंस को हम बोलते हैं लीनियर इक्वेशंस इन 2 वेरिएबल्स। इस पूरे चैप्टर में ऐसे ही टाइप के इक्वेशंस को हम सॉल्व करने वाले हैं। नाउ स्टूडेंट्स, ऐसे ही कुछ एग्जांपल्स देखते हैं। वी हैव x plus y minus 8 is equals to 0. First one पे फोकस करते हैं। Now this is a linear equation in 2 variable. What we are going to do in this slide is we are going to discuss the coefficients of the variables and also the constant terms. So let us focus on the first one, x plus y minus 8 equals to 0. Students, what is the coefficient of x over here? X plus y. The coefficient of x is 1. Very good. Plus y. What is the coefficient of y, students? Again, the coefficient of y is 1. And what about the constant term? You have the constant term as minus 8. So here the constant term is minus 8. Remember students, whenever you're writing the coefficients or the constant terms, don't forget to write down the signs with them. Plus 1, plus 2, minus 3, minus 4, जो भी sign है उसी के साथ we are going to write. Let us see the second one. 3x minus y minus 9 is equals to 0. What is the coefficient of x over here? The coefficient is 3. Wonderful. What about the coefficient of y now? Be careful. The coefficient of y is not 1, it is minus 1. And the constant term used is minus 9. Perfect, students. Let us focus on the last one. Can you tell me the coefficient of x in the last equation? It is minus 3x plus 4y. So the coefficient of x is minus 3. The coefficient of y is 4 and the constant term used is minus 6. Now students, इतने सारे examples, why have we seen? There's a simple reason. Let us compare the coefficients. चलो, x का coefficient in the first equation was 1, second में 3, third में minus 3. मतलब the coefficient of x can be any number positive or negative. तो in general, let us say the coefficient is a. First term हो गया ax. Similarly, the coefficient of y can also be any number, positive or negative. See the following examples. So let us say in general it is plus by. And constant term के लिए भी same conditions है. It can be any other number, any number. So let us say in general it is plus c equals to 0. Now this over here, students, is the general form of every linear equations in 2 variables. Every linear equations in 2 variables. Now students, remember, variables सिर्फ x और y है. A, B and C are used as numbers. A, B and C are any real numbers. But एक छोटा सा condition है. The condition is that A and B का value cannot be equal to 0. Now why is that कि A and B का value cannot be equal to 0? So let us check. What if A का value 0 हो गया? Let us assume कि in the standard equation, in this general equation, A का value is 0. तो मतलब A की जगह पे we are going to substitute 0. So it will become 0x plus by plus c equals to 0. Now students, 0x मतलब 0 into anything is 0. So the term of x will get eliminated. तो बच गया by plus c equals to 0. Where b and c are any real numbers. So again, now we are left only with one variable. तो ये क्या बन गया? Linear equation in one variable. So this is the reason why the value of a cannot be 0. And similarly, the value of b also cannot be 0. Why? Because अगर b 0 हो गया तो y eliminate हो जाएगा. Again, it will become linear equation in one variable. So this is the reason why the value of a and b cannot be 0. C के लिए ऐसा कोई भी कंडीशन नहीं है, because अगर C का वैल्यू 0 हो भी गया तो वेरिएबल्स तो है ax and by will be left.
तो इट विल बी लीनियर इक्वेशन इन टू वेरिएबल्स. सो सी के वैल्यू में कोई प्रॉब्लम नहीं है. सी कैन बी any number, any real number. It can be positive, negative or even 0. Now students, questions आएंगे find the values of the variable या फिर find the solution. So remember in linear equations in two variables in this chapter, the values of the variable जो हम find करेंगे उसी को we are going to call as solution for the given equations. I hope this part is clear. Let us move on towards solutions. इसके बारे में थोड़ा सा डिटेल में डिस्कस करते हैं. Now, let us start with linear equations in one variable. एक बेसिक सा एग्जांपल, x plus 3 equals to 7. Now the question is solve and find the value of x or find the solution of this given equation. सिंपल है, एक ही वेरिएबल है, बाकी सब नंबर्स है, प्लस 3 को ट्रांसपोज कर दो, x का वैल्यू हो जाएगा 7 minus 3 which is nothing but 4. एकदम इजीली आंसर मिल गया. तो the solution for a linear equation in one variable can be found out very easily. एकदम इजीली मिल जाता है एंड एक ही इक्वेशन की हेल्प से मिल गया. Let us check for linear equations in two variables. उसमें भी इतना सिंपल वे है क्या? So linear equations in two variables का एक बेसिक सा एग्जांपल लिया, x plus y equals to 8. Now find the solution, which means find the values of x and y. दोनों variables है. Now students, यहाँ पे बहुत सारे आंसर्स आएंगे. You're going to get infinite number of answers. Like students will be कि 5 plus 3 8 होता है तो x का वैल्यू 5, y का वैल्यू 3. कोई बोलेगा x का वैल्यू 4, y का वैल्यू 4, वो भी satisfy कर रहा है. And there are infinite number of solutions, positive and negative और zero भी. तो remember students, every linear equation in two variable has infinite number of solutions. Infinite number of solutions. कोई भी एक linear equation in two variable ले लो and there are going to be infinite solutions. तो find कैसे करेंगे कोई एक particular solution? तो to find a particular unique solution, we are going to need at least two linear equations with the same variables. Variables same होने चाहिए. ऐसा नहीं कि first equation x और y में, second वाला a और b में, and then we are finding it. No. You're going to need a pair of linear equations in two variables. मतलब same variables होना चाहिए. तो दोनों का एक common solution we will get. So this is how we are going to solve linear equations. Now students, to find the solutions of linear equations in two variables, we have four different methods. First one, elimination. It is done by equating the coefficients. We'll talk about it in the next slide. The second method is substitution. The third one is graphical and the last one is Kramer's rule. Now, ये lecture में we are going to cover the first three methods. Kramer's rule next video में cover करेंगे. Let us start with the first one, elimination by equating the coefficients. Now to understand this method, एक easy सा example ले लेते, एक question ले लेते. Let us take a question. Here are two linear equations. एक pair दे दिया, 3a plus 5b equals to 26 and a plus 5b equals to 22. Now students, to understand this method, इसको step wise समझते हैं, ज़्यादा easy हो जाएगा. So let us start with step number 1. Step number 1 is numbering the equations. जो भी equations given है, उनको number कर दो. This step is uniform for all the methods. Step number 1 सब में common रहेगा. So what you are going to do is start with the numbering. First equation को ले लिया, 3a plus 5b is 26, number कर दिया 1. Second equation को ले लिया, a plus 5b is 22, number कर दिया equation number 2. First step done. एकदम simple, numbering हो गया. Let us move on towards step number 2. Now step number 2 is very important. Step number 2 is equating the coefficients of any one variable. दो variables है, किसी भी एक variable का coefficient equate करेंगे in both the equations. Let us focus on the first variable, which is a. Now students, if you observe, the coefficient of a in the first equation is 3.
and the coefficient of a in the second equation is 1. ये कर दिया फर्स्ट इक्वेशन के एंड सेकेंड इक्वेशन के फर्स्ट वेरिएबल के कोएफिशिएंट्स. लेट अस सी द सेकेंड वेरिएबल आल्सो. b के कोएफिशिएंट इन द फर्स्ट इक्वेशन इज 5 and second equation में is also 5. Now what we have to do is we have to equate any one coefficient. Now students always remember pick the easy one. अब ये के सिनेरियो में if we see b के coefficients already similar है, the coefficients of b are already similar, तो equate करने का जरूरत है क्या? नहीं ना, because already question में equate करके ही दिया है, मतलब step 2 तो question में ही हो गया. So let us move on towards step number 3. Step number 3 is checking the signs of the variables with the equal coefficients. Now students focus on this part. Checking the signs of the coefficients. जो equal coefficients है उनका sign check करेंगे. Like in this case the coefficients of b are same. दोनों coefficients है +5 and +5. So remember this golden rule students. Same sign subtract. अगर दोनों कोएफिशिएंट्स का, दोनों इक्वल कोएफिशिएंट्स का साइन सेम है तो वी आर गोइंग टू सबट्रैक्ट बोथ द इक्वेशंस, एंड साइन डिफरेंट है तो वी आर गोइंग टू ऐड. रिमेंबर द स्टूडेंट्स, सेम साइन सबट्रैक्ट, एस एस एस. डिफरेंट साइन देगा तो ऐड कर देना है, सिंपल. नाउ सिंस यहां पे दोनों साइन सेम है तो वी आर गोइंग टू सबट्रैक्ट बोथ द इक्वेशंस. तो यहां पे वी आर सबट्रैक्टिंग इक्वेशन नंबर 2 फ्रॉम इक्वेशन नंबर 1. नाउ ऐसा कोई कंपल्शन नहीं है जहां पे 2 को ही 1 से सबट्रैक्ट करना है. यू कैन डू इट इधर वे, 1 को भी 2 से कर सकते हैं, कोई प्रॉब्लम नहीं है. तो नाउ सिंस यू आर सबट्रैक्टिंग 2 फ्रॉम 1, तो पहले लिखेंगे इक्वेशन नंबर 1, उसके नीचे लिखेंगे इक्वेशन नंबर 2, एंड नाउ वी आर सबट्रैक्टिंग. तो मतलब सेकेंड इक्वेशन के पहले माइनस साइन आएगा. व्हेनेवर देयर इज अ माइनस साइन, वी नो दिस रूल राइट, क्या हो जाएगा, साइन चेंज हो जाएगा. तो प्लस ए विल बिकम माइनस ए, plus 5b will become minus 5b, plus 22 will become minus 22. Let us subtract. 3a minus a, 2a, 5b और minus 5b हो जाएगा cancel, and 26 minus 22 will give you 4. So now we have 2a is equal to 4. एक variable eliminate हो गया, right? तो now 2a is equal to 4. तो a का वैल्यू इजीली मिल जाएगा बाय ट्रांसपोजिंग 2 टू द लेफ्ट राइट हैंड साइड. तो a का वैल्यू विल बी 2. नाउ स्टूडेंट्स लेट अस मूव ऑन टुवर्ड्स स्टेप नंबर 4. सब्स्टिट्यूट द वैल्यू ऑफ वन वेरिएबल इन एनी ऑफ द इक्वेशन. ये जो वेरिएबल का वैल्यू मिला है वी आर गोइंग टू सब्स्टिट्यूट दिस वैल्यू इन एनी ऑफ द इक्वेशन. फर्स्ट में करो, सेकेंड में करो, जो भी इजी लगे उसमें कर दो. तो सिंस वैसे सेकंड वाला इक्वेशन थोड़ा थोड़ा सिंपल है, a का वैल्यू सेकंड इक्वेशन में सब्स्टिट्यूट कर देते हैं. तो a की जगह पे विल बी राइटिंग 2. तो इक्वेशन नंबर 2 विल बिकम 2 प्लस 5b इक्वल्स टू 22. लीनियर इक्वेशन इन वन वेरिएबल, एकदम सा सिंपल हो गया. तो नाउ 5b विल बी इक्वल टू 2 को ट्रांसपोज कर दिया तो 22 माइनस 2. तो 5b का वैल्यू इज 20, 5 को भी ट्रांसपोज कर दिया तो b का वैल्यू विल बी इक्वल टू 4. a का वैल्यू मिल गया, b का वैल्यू मिल गया, मतलब दोनों वेरिएबल्स का वैल्यू मिल गया. तो दिस इज हाउ वी आर गोइंग टू राइट डाउन द फाइनल स्टेटमेंट. द सॉल्यूशन फॉर द गिवन साइमल्टेनियस इक्वेशंस इज a, b which are the variables ब्रैकेट में is equal to 2, 4. I hope this sum is clear to you all. Let us take one more example. Question is x plus 7y equals to 10 and 3x minus 2y is equals to 7. Steps याद है? There are 4 steps. We remember the 4 steps, right? Step wise करेंगे. Step number 1 easy. Number both the equations. ये आया equation number 1. ये आया equation number 2. Step 1 completed. Step 2 में क्या करना था? Equating the coefficients of any one variable. Compare कर लो. What are the coefficients of x? First equation में it is 1. Second equation में it is 3. What are the coefficients of y? First equation में it is 7. Second में it is -2. अब equate करना है. यहाँ पे same coefficients नहीं है. x का और y का coefficients दोनों equations में अलग अलग है. तो equate करना पड़ेगा.
नाउ व्हाट वी हैव टू थिंक इज विच वन इज इजी टू कन्वर्ट. x के कोएफिशिएंट्स इजीली कन्वर्ट हो जाएंगे या y के. इफ यू सी x में 1 है और 3 है, तो 1 को हम इजीली 3 में कन्वर्ट कर सकते हैं. हाउ? बाय मल्टीप्लाइंग इट विथ 3. तो इजीली हो जाएगा, सिर्फ एक ही इक्वेशन में चेंजेस करने हैं. सेकेंड, अगर y को करना चाहे तो भी कोई प्रॉब्लम नहीं है, बट 2 and 7 पॉसिबल नहीं है ना. अगर करना है तो दोनों इक्वेशंस को चेंज करना पड़ेगा, हेक्टिक हो जाएगा. तो इट इज बेटर कि हम x के कोएफिशिएंट्स को इक्वेट करें. लेट अस इक्वेट द कोएफिशिएंट्स ऑफ x. कैसे करेंगे? इक्वेशन नंबर 1 को किससे मल्टीप्लाई करना पड़ेगा? बाय 3. तो लेट अस मल्टीप्लाई equation number 1 by 3 on both the sides. Remember this thing, students. Whenever you are multiplying, whenever you are changing an equation, so remember change both the sides. Left hand side as well as right hand side, दोनों change करना पड़ेगा, वरना your answer will be. So now we are multiplying each and every term by 3. So x into 3 will give you 3x. 7y into 3 will give you 21y. एंड राइट हैंड साइड का 10 into 3 will give you 30. बन गया इक्वेशन नंबर 3. बिकॉज दिस इज अ न्यू इक्वेशन, इसको भी नंबर कर दो. एंड सेकेंड इक्वेशन तो हमारे पास ऑलरेडी है. नाउ चेक द कोएफिशिएंट स्टूडेंट्स. कोएफिशिएंट्स ऑफ एक्स एंड वाई सेम है या डिफरेंट है? चेक करो. इक्वेशन नंबर 2 एंड इक्वेशन नंबर 3 में x के कोएफिशिएंट्स आर सिमिलर, x के कोएफिशिएंट्स आर इक्वल. तो कोएफिशिएंट्स इक्वल हो गया. तो मूव ऑन टू स्टेप नंबर 3. चेक देयर साइंस. +3 मतलब दोनों के साइंस सेम है. सेम साइन रहेगा तो क्या करेंगे? एडिशन की सब्ट्रैक्शन. द गोल्डन रूल, सेम साइन सब्ट्रैक्ट. तो अगेन यहां पे सब्ट्रैक्शन होगा. तो वी कैन सब्ट्रैक्ट इक्वेशन नंबर 2 फ्रॉम 3 और 3 फ्रॉम 2 एज यू लाइक. 1 से मत करना. रिमेंबर सब्ट्रैक्टिंग दोज इक्वेशंस जिनमें कोएफिशिएंट्स इक्वल हो चुके हैं. So now we are subtracting equation number 2 from equation number 3. तो पहले we are going to write equation number 3. नीचे लिखेंगे equation number 2. Because subtraction है, सेकेंड एक जो लास्ट में इक्वेशन लिखा है उसमें हर एक टर्म का साइन चेंज हो जाएगा. +3x will become -3x, -2y will become +2y and +7 will become -7. Let us subtract. 3x minus 3x cancel. वेरिएबल एलिमिनेट हो गया. 21y plus 2y will give you 23 and 30 minus 7 will again give you. So 23y is equal to 23. y का वैल्यू is equal to 1. सिंपल, एक वेरिएबल का वैल्यू मिल गया. अगेन फॉलो योर स्टेप नंबर 4. इस वैल्यू को नाउ यू हैव 3 ऑप्शंस. फाइंड द इजियर इक्वेशन एंड सब्स्टिट्यूट कर दो. So we are substituting this in equation number 1. x plus 7y is 10. y का वैल्यू is 1. Substitute कर दो तो x plus 7y will become x plus 7 into 1 equals to 10. तो x plus 7 is 10. 7 को ट्रांसपोज कर दो, x का वैल्यू मिल जाएगा. So this is how we get the final answer. And final answer को स्टेटमेंट में लिख दो. The solution for the given equations is what? 3 and 1. x, y, 3, 1. x का वैल्यू पहले, y का वैल्यू बाद में. I hope that elimination वाला concept is clear. Now students, अब what we are going to do is we are going to do a sum which is of elimination method, but एक जरा सा हटके method है. Let us check. The question is 99x plus 101y is equals to 499, and the second equation is 101x plus 99y equals to 501. स्टेप्स तो सिमिलर है. स्टेप नंबर 1 हमेशा सेम ही होता है, नंबरिंग द इक्वेशन. तो नंबर कर देते हैं, दोनों इक्वेशंस को नंबर कर दिया. स्टेप नंबर 2 में इक्वेटिंग द कोएफिशिएंट था. नाउ x के कोएफिशिएंट्स कंपेयर करो, 99, 101. y के कोएफिशिएंट्स चेक करो, 101, 99. सब बिग नंबर्स राइट. इनको कन्वर्ट करना बहुत डिफिकल्ट है. बट इफ यू ऑब्जर्व देयर इज अ पैटर्न स्टूडेंट्स. द पैटर्न इज इफ यू चेक the coefficient of x in the first equation and the coefficient of y in the second equation same to same है, signs भी same है. Also the coefficient of y in the first and the coefficient of x in the second वो भी same है.
अगेन साइंस भी सेम है, तो दिस इज द पैटर्न दैट यू नीड टू रिमेंबर. कभी भी ऐसे क्रॉस में वैल्यूज विद देयर साइंस सेम आ गया, तो वी आर गोइंग टू यूज अनदर मेथड in elimination which is called as ASA method. Addition, subtraction, addition. Short form ASA method. ये geometry वाला नहीं है. ASA. Let us write down ASA ऊपर. अब पहले what we are going to do is we are going to add, then we are going to subtract and उससे हमको और equations मिलेंगे. Let us see this. First A था, मतलब adding both the equations. दोनों इक्वेशंस को ऐड कर देना है, तो लिखो फर्स्ट इक्वेशन, सेकेंड इक्वेशन एंड दोनों को ऐड कर दो. ऐड ही करना है ना, इजी है. साइन चेंज हो गया तो कुछ होगा ही नहीं. 99x प्लस 101x विल गिव यू 200x. 101y प्लस 99y विल गिव यू 200y एंड 499 प्लस 501 विल गिव यू 1000. इफ यू चेक, सब में कुछ तो कॉमन है. सारे के सारे कोएफिशिएंट्स और कांस्टेंट्स जो भी है, तीनों टर्म्स 200 से डिविजिबल है. इसीलिए वी आर डिवाइडिंग द एंटायर इक्वेशन बाय 200 सिंपल बनाने के लिए. तो 200 कैंसिल, यू विल बी लेफ्ट विथ x प्लस वाई एंड 1000 अपॉन 200 विल गिव यू 5. तो एक नया इक्वेशन मिल गया, आगे काम आएगा. लेट्स नंबर दिस एज इक्वेशन नंबर 3. तो a हो गया, a s a. So now we are going to subtract the same equations. So subtracting equation number 2 from equation number 1, as I said in the previous slide, 1 को 2 से करो, 2 को 1 से करो, कोई difference नहीं है. So we are subtracting 2 from 1. First equation लिख दिया, second equation लिख दिया. Because subtraction है, sign change हो जाएगा. Now 99x minus 101x will give you minus 2x. 101y minus 99y plus 2y. And again 499 minus 501 will give you minus 2. If you check, सबको minus 2 से divide कर सकते हैं, right? वो minus 2x थोड़ा ये लग रहा है, तो let us divide everything by minus 2 because सब 2 से divisible है and sign भी ये कर लेते हैं. तो dividing both the sides by minus 2, तो x का coefficient cancel हो गया, y का coefficient cancel हो गया, but sign change हो जाएगा because we are dividing by minus 2. You will get x minus y equals to 1. एक और इक्वेशन मिल गया. तो दिस इज इक्वेशन नंबर 4. a हो गया, s हो गया, लेफ्ट विथ a अगेन. अब किसको ऐड करेंगे? यस, ये जो दो नए इक्वेशंस मिले, इक्वेशन नंबर 3 एंड इक्वेशन नंबर 4, वी आर गोइंग टू ऐड these two equations. So adding equation number 3 and 4. Now students, this is very simple. I want you all to pause the video and complete the sum. And then cross check your answers. Let us see. X plus y is 5, x minus y is 1. दोनों को add कर दो. X plus x will give you 2x. Y and minus y will get cancelled out. And 5 plus 1 will give you 6. तो easily answer मिल जाएगा. 2x will be equal to 6. तो x का value easily मिल जाएगा by transposing. X का value is equal to 3. Now once you got the value of x, you have 4 options, but simpler कौन सा है? थर्ड एंड फोर्थ. दोनों में से किसी एक में सब्स्टिट्यूट कर दो and get the value of y. We are substituting in 3 because वो प्लस है, right? तो x plus y is 5. प्लस देख के थोड़ा अच्छा लगता है ना. तो x plus y is 5. x की जगह पे let us substitute 3, तो you'll get 3 plus y is 5. 3 को ट्रांसपोज कर दो, y का वैल्यू मिल जाएगा. This is how we solve sums using ASA method in elimination. Let us move on towards the second method, which is substitution. Now students, ये method में भी we are going to use steps to remember, right? तो start करते हैं एक example के साथ. There are 2 equations given as usual. Start with step number 1. We know step number 1 सब में common है, which is numbering the equations. तो फर्स्ट इक्वेशन को लिया 5m minus 3n equals to 19. इक्वेशन नंबर 1. m minus 6n equals to minus 7. इक्वेशन नंबर 2. फर्स्ट स्टेप डन. नाउ यहाँ पे the second step is different. The second step is isolating one variable of any one equation. दोनों में से whichever equation you find easier, you can consider any equation and you have to isolate one variable. तो
in this particular question, I'm considering equation number 2. You can also consider equation number 1. There is no problem in that. So let us consider equation number 2. M minus 6n equals to minus 7. Isolate any one variable which has an easier coefficient, simpler coefficient. So the coefficient of m is 1. So let us isolate m. Now how to isolate m? जो भी लेफ्ट हैंड साइड में m के अलावा है, transpose it to the right hand side. Like minus 6n will be transposed and it will become plus 6n. So we have got the value of m in terms of n. Number this equation as equation number 3. Step number 2 is done over here. Now the step number 3. This one's very important, students. Substitute this value of the variable in the other equation. Do not substitute this value of m in the equation जो हमने consider किया है. Like we have considered equation number 2. So do not substitute this value of m in equation number 2. Substitute this value in the other equation, the remaining equation, which is equation number 1. So substituting the value of m in equation number 1. जहां पे m है वहां पे we are going to write minus 7 plus 6n. So 5 into m will become 5 into minus 7 plus 6n, and minus 3n as it is equals to 19. Let us open the brackets. 5 into minus 7 will give you minus 35. 5 into 6n will give you 30n. Minus 3n as it is equals to 19 as it is. Now if you see, you have 30n minus 3n, which will give you 27. Now let us transpose all the numbers to the right hand side. Minus 35 will be transposed to the right hand side and will become plus 35. 19 plus 35 will give you 54. Transpose 27 and you will get the value of n as 2. एक वेरिएबल का वैल्यू मिल गया. Now simple. Substitute this value of n in that equation number 3 which we have highlighted. Right? Directly m का वैल्यू मिल जाएगा. So substituting n equals to 2 in equation number 3, we get m is equal to minus 7 plus 6n था ना, n की जगह पे will write 2. Just open the brackets and you'll get the value of m. So I hope the method of substitution is clear to you all. Remember the steps, students, so confusion nahi hoga. Now the next sum, students, I want you all to try. I'll give you some hints and I want you all to try. So let us move on towards the next sum. Now next sum we have taken it in some fraction. Coefficients को fractions में लिया है. Right? Step number 1 तो same है. Number the equations. First equation and second equation. Now students, यहाँ पे if you observe, the coefficients of the variable x and the constant term in equation number 1 are both in fractions. In the right? It's 1 upon 3, 10 upon 3. Even in the second one, the coefficient of y and the constant term are in fraction. तो fractions है ना, बहुत confusion create होता है. Let us do one thing. Fraction को eliminate करके equation को simple बना देते हैं. Now observe equation number 1. The denominators of the fractions are 3. Denominator मतलब divide. Divide को if you have to cancel out, you will have to multiply, and since the denominator is 3, we are going to multiply the entire equation by 3, multiplying each and every term of equation number 1 by 3. So we will get 1 by 3 x into 3, y into 3, and 10 by 3 into 3. So 1 by 3x into 3, 3 and 3 cancel होके बच जाएगा x, 3 into y is 3y, and 10 upon 3 into 3 will also give you 10. Simple equation मिल गया. Number this one as equation number 3. Same way में we are going to repeat this thing for equation number 2. Now observe equation number 2. The denominator is 4. तो multiply किससे करेंगे? Multiply equation number 2 by 4 on both the sides. Again each and every term को 4 से multiply कर दो. 2x into 4 will give you 8, 1 by 4y into 4 will give you y, and 11 by 4 into 4 will give you 11. This is your equation number 4. अब equation simple हो गया.
Now I want you all to pause the video and solve this question by using substitution method. I'll directly give you the answers. The answer for these equations is going to be x ka value is going to be 1 and y ka value is going to be 3. I hope you have completed the sum. So students, I hope this video was helpful to you all. Please like, share and subscribe the video. We'll see you in the next lecture. Tab tak ke liye everyone stay home, stay safe, take care.